Hello, everyone, and welcome again to KOP Fusion. The Premier League fixtures are out, and we are super excited. With me today, we have Ishan. He's back finally after a long time to join us. Yes, Ishan, yes, how are you, yes. man? I'm doing good. I'm doing good. How are you, bro? All great, man. All great. After that typical hectic season that we've had, and I think it's really good to be positive again with no almost no injuries in our squad. So it's a feel good factor for us now. Hopefully, no more injuries. So, how has it been like? Before we discuss the fixtures, because obviously the fixtures were out in a couple of hours back, and just can you just sum up the previous season overall, just in maybe a couple of minutes for us? Yeah. So, I mean, the last season, I think the injuries screwed us over royally. I mean, our whole midfield was essentially gone because they were back into defense, and then both Fabinho and Henderson also got injured. So it was like the worst possible scenario for us that could have existed. But yeah, I mean, it was great to see players like Nat Phillips and Rhys Williams step up and give their best foot forward and just help us achieve that third position. And not to forget that how in the last 7-8 games, how Thiago actually got so involved into the game and he actually was dictating the games, and that was a really big factor for our attacking output as well. Definitely, I think you have summed it up perfectly. The last part, maybe the last quarter of the season, or the last 5-7 games, maybe we really showed that real Liverpool, and we came close. We came close to being back again. Unfortunately, Yeah, because of the injuries, the whole season was like, I think, a very forgettable season, to be really honest. So let's yeah, move on now. Let's move on from previous season. It's a season to forget for us, to be really honest. There were so many cases of injuries, of poor decisions, of ridiculous fixtures and controversies. Let's just hope that the new season that's come up is going to be more fair and is going to be yeah, more competitive, right? yeah, Okay. yeah. So Hoping for that. yeah, same here, man. All of us are. All of us are like just I mean, I think the worst opponents that we can ever get are the referees, and the only fear that we Yeah, have is of referees. That's about it. We don't care about what the starting yeah, 11 is of the opponent. yeah. We just care about who the referee Like, is. मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो होता है कि मतलब यार बस मैनचेस्टर बॉर्न रेफरी ना मिले, बाकी सब फिर भी ठीक है, बट वहाँ और कोई रेफरी है भी नहीं उनके पास, एग्जैक्टली तो लेकिन वो काफी 90% रेफरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने हटा दिया फिर वही फिर तो आपने 90% रेफरी तो हटा ही दिया. तो All भाई right. दिक्कत ही। Exactly. So, I mean, let's hope that the referees are also fair to the game, not to us, just fair to the game. Yeah, Be professional. Just work, do your work properly, and that's about it. That's all we ask as fans, right? As yeah, football fans. So the fixtures are out. They were out a couple of hours back, and yeah, the first competition that we face is Norwich City away. The second is Burnley after a week, and the next week is Chelsea. So these are the first three in August. So we just have these three fixtures. So what's your call? The last time we played Norwich at home, we won the league, and we also played Wolf in the very last game in the yeah. same season. So do you really feel? I like feeling it right now I'm already already. feeling it. I'm already feeling it. I think it's one of the best times, to actually face Chelsea. To be really honest, because you have the season has just begun, and there is no like rhythm to their game as well. And whereas we know that we start the season, all the seasons under Klopp, we have started really well because our preseason is such that physically we are so up there already in the first game of the season due to how we prepare in the preseason, that Yeah, we're already ready for the season ahead. Whereas true. like a lot of the teams, like I'll say almost 80-85% of the teams, they take at least 2-3 matches to get all of their players to get to speed and adjust to the whole you know holiday hangover to be totally over. Exactly. But yeah, I mean, facing Norwich, who have sold Bundia right now, and facing Burnley.
I don't think it'll be a tough task. Pretty, it'll be easy, but Chelsea would be interesting for sure. Like it all again for me, Chelsea is more so highly dependent on Kante, and if he starts off well, then it's going to be a tough fixture for us. Okay. So when we talk about facing the top six again, now we're already facing Chelsea in August. Now I have it here in front of me. 2nd October is City, Yeah, Manchester City. 23rd is Man United, and apart from that, I mean, we do have Arsenal and Everton in November. Let's see how that goes. We do have you want to count Tottenham them? and Leicester. Are Sorry. you really counting? Are you really counting them as well now? No, that's what I said. We just have them in in the middle of our way, I guess. So that's about it. But given the previous occasions where Arsenal have literally kicked us out of competition, Yeah, cup competition, yeah, I'll not underestimate them because we have literally flopped in the past, say 1 year, among yeah, in front of these team. yeah. But I So think that's we'll go past Arsenal easily this time round, because I think one of the Premier League matches, it was just like really unexpected Van Dijk mistake and Allison yeah. mistake all together in Alisson. one match. That is like you'll never think of that ever happening ever. So yeah, I think those will be like relatively easier fixtures. Also because Ancelotti is no longer at Everton now. So yeah, Oh, yes. That was a very embarrassing moment. My God, we just signed a manager 1 year back, and he leaves you. He signs like James Rodriguez from. Madrid. And I just don't know how Lose it right James there. would be feeling. James would be feeling that I came here for this fucker and now he has just left me alone over here. He literally came from Real Madrid to Yeah, Everton, and he yeah, went from Everton to Real Madrid, and he's like, "What the fuck? Like, why?" Oh my God! You really feel for that poor guy because like you yeah, remember when he was signed, Everton had little billboards of James coming in, and yeah, all that promotion that made. Like now, you just have to see their faces, how they'll be reacting. yeah. Unfortunately. Absolutely, absolutely. Yeah. No, so so leaving Everton, Arsenal behind, when we talk about fixture congestion again, as Liverpool fans, this is one topic that we talk about apart from referees, fixture Yeah, congestion, right? Because it kind of bothers us a lot. a lot. Yeah, So we have December, 4th of December, Wolves, 11th is Aston, yeah, 15th is Newcastle, 18th Tottenham, Leeds United on 26th, and Leicester City at on 28th. Out of which around 3 are home games and 2 are away. That's 5 games again. in 1 month. Yeah. So I mean, 5 games in 1 month in December, especially when you have the FA Cup, the Carabao, and also you have the Champions League. Don't you think is again it's a screw up by the fixtures made by the Premier League, and again there is that Oh, lack of absolutely, you absolutely. Like if you look at all of this, like I mean, you just look at the December fixture, and then you think that a lot of Premier League players will be going to AFCON, and once AFCON is done, like as soon as the season is over, you have what do you say, the World Cup coming over there. So you know this back-to-back football, which for a viewer is great, for their uh, their TV revenue is great, but if you look at player health, it's really bad. It's like it's the worst phase to be a player right now, in my opinion, because if you see December, for example, like you'll be facing Leeds, and Leeds is a team which is like high high octane football. intensity. Yeah, yeah, And they'll be like going all out. So yeah. That's true. you also have to see that you'll have to work really hard against teams like Newcastle United, Aston Villa, Tottenham as well, and Wolves as well, as well as Leicester. So December is like a very tricky month, and as soon as December ends, you have Chelsea away from you. So it's it's like those, I'll say, like right from your uh I won't even say 4th of December. If you look at like right from the Southampton game in November, like that's on 27th. So if you see like right Yeah, almost like exactly. five in 5
in 5 weeks you have almost like what, six, Seven, eight, 9 games. 9 games. Yeah. So Okay. Yes, that's including those that, two. Yeah. yeah, that's huge. That's huge if you see. And I mean, it's I don't know whether we'll have Mane, Salah, and Keita for the Chelsea game or not. That'll be interesting to see whether they'll be allowed to play in that game or not, or whether they'll be off to their national camp. Yeah, now that's again interesting because I think that's one of the reasons that we are not aiming for, I guess, African players anymore because we Yeah, already have so yeah, many people leaving for yeah, these Afcons. Already the Euros are there. You have yeah, Trent injured. You have Henderson yeah, slightly doubt for injury. So I mean, things are already already screwed up for us. yeah, We yeah, don't even have a good backup for Trent at the moment. Nico is still, it is work under progress, I guess. So yeah, we really can't trade him at the moment. yeah, Again, going by these December fixtures, obviously there is still the lack of coordination. We are still gonna be, it's gonna be so hectic for us because of the Carabao and FA. I yeah, had this conversation with John Aldridge actually. So when he okay, came to India, we had this just this telecop event here, and I yeah, asked him the same question that what do you as a player feel about this congestion? Like there's so many fixtures just piled up, and people are just trying to make money out of every single thing. And I think we yeah, have seen the same during the Christian Eriksen incident recently as yeah, well. absolutely, So absolutely, no matter whatever happens, the game has to go on for some reason. yeah, The reason is obviously these football bodies know the reason more than us. Um, so John Aldridge, what he replied back was, you know, sorry, it was Jason McAteer, not John Aldridge. Sorry, okay, okay, I screwed it up. okay, Yeah, it was Jason McAteer. Sorry, I just yeah, remember what did I met John Aldridge in India. Jason McAteer, and okay, Emily Heskey. So okay, they responded that as a player you need to be in and out, you need to be training, you want to enter the first team, you want to be in the first team, you want to play the game, but then yeah, again you're also a human at the same time, and your body can only do so much, right? So correct, there is one point, there's a thin line, and if you cross that line you are either out for the season, you're out for 6 months, yeah, 4 weeks, 6 weeks. You just don't know about it, and this is something that these teams and these bodies have not understood. yeah, And it's been, and I think we are going on and on about this thing for seasons now, right? I mean, there's yeah. like just falling on deaf ears. So you look at it like, how even Klopp, since he has come to England, he has been crying out loud for a winter break. And it is purely because he knows that if there's a winter break, then any player who's going for, say, like an AFCON, or like, that congestion of fixtures, like after the international fixtures, like, there'll be friendlies as well after the Euros get over. There'll be friendlies in, Yes. in the middle. Yeah. So some of the players will go for that as well. So your best players are overplaying a lot, like a lot, and you want them to be fit so that they can play for the club and country both. So not only the onus is on the club manager to manage the minutes, but it's also about the country's manager to manage the minutes, which is really, really important. Like, I mean, this is not purely because of Liverpool bias, but if you look at like even the Joe Gomez injury, okay, there was nothing made out of it, or it was just like how the managers totally downplayed whatever happened and however it happened. So it just gives a very unbalanced, dynamic to the whole team as a whole and a country as a whole. So, like, if I'm in Joe Gomez's shoes, I would be like, why would I play for my country? Like, why that? And then, then you'll see a lot of players, good players, not going there. So it's a Exactly. mix. It's a mixture like of playing time and how these managers make do of the talent they have at their disposal. Hmm. That's true, and but I do really think that I mean, I highly doubted that these international managers they care about how much time the player is giving for the leagues. I really don't think they do it because I think they are very very honest. They are very very selfish because they know this particular player is going through some Yeah, series of injuries, or he's not particularly fit, and still they are called upon, right? So this has yeah, happened. So
Yeah, I International think the managers, it's kind of a dicey situation with whatever their opinion is, to be honest, for yeah, me. I think the biggest example of that is Rashford. Yeah, Because I was just reading one of his interviews sometime back, and he said, I think it was with MUTV, and he said that he has been playing with a back injury since October. A back injury since October, and it's been like easily 5 6 months since he's been playing. And now you have the Euros, and then the season starts back, and then you have the World Cup. I just can't see how Rashford can really have a long career this way. So exactly. and the same with Henderson. I mean, as soon as he is fit, Southgate will start him. Same as Rashford, he'll start him because he knows the effect he has on the players, the effect he has on the performance on the pitch. So it's just a situation which is not feasible for the players, just because Yeah. the managers want X player to be on the pitch rather than just try to uh, either make another player learn that role, or just change their tactics a bit. So it's very I'll say rigid from the Yeah. managers as well, uh, both on the club level. If you talk about Rashford, because it's totally stupid to play a player who's so gifted, so talented for such a long amount of time uh, True. with such a grave injury. Exactly. I mean, that's the whole point, right? That's the whole point of being cribbing in and out, day in, day out, on every single podcast, every single live session that we have. Yeah, We are just cribbing about fixture congestion, yeah. poor referee decisions, VAR, blah blah blah, all the same culprits all over again, and there's still nothing happening apart from, oh, you know what, we'll thicken the line. Like, yeah, fine, whatever. So let's take some questions there, because I For I sure. think Vishal bhai is also here and they have some really good questions. So last season में हमने home games में 5-6 हारे, Mhm. unfortunately, yes, and कमजोर Yeah. teams के against points गवा दिए. आप दोनों इस सीजन क्या देखना चाहते हो, कैसे हम टैकल करें? ईशान भैया, आप बताओ. Vishal bhai, so I think the games which we lost were like purely based on our injury issues which we had. Because if we had like even like I'll say just one of our main three centre backs, it would have been a totally different ball game. Like then you would have seen Fabinho play in midfield, or like or like Henderson play in midfield, and just Fabinho in the defense till the time we get Nat and Reese a bit more developed over the season. I mean, that changes the dynamics totally. Like we saw, like as soon as Fabinho got into the midfield, the freedom Thiago had was insane. And as I said earlier, like when Thiago starts dictating games, like you could just see the effect. It just transforms the team. So I just hope this season we don't have such an injury crisis, and we are relatively injury free. Yes. But again, like knowing that we have such a cramped up fixture schedule, I really, really, really hope that we have good depth, good quality depth this time round. And that's why I really hope that this Euros get over really fast and we see some more transfer activity. So yeah. Okay, so Vishal Paji, now if I am to answer that question about कि भाई अब क्या सीन है तो देखो, मैं साफ सीधी बात ये कहूंगा आपसे कि 5-6 गेम्स तो हम हार गए, डेफिनेटली हार गए, बट वो हमारी खुद की गलती थी. आई नो दैट वी डिडंट हैव दैट डिफेंस, वी डिडंट हैव वैन डाई, वी डिडंट हैव दैट दैट डोमिनेशन और द कॉलिंग. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप दो सेंटर बैक डिफरेंट भी यूज कर रहे हो, तो वो विंगर्स को इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दे पाते कि तू पीछे आ, मैं Correct, आगे जा रहा हूँ, तू आगे जा, तू correct. मैं पीछे आ रहा हूँ. वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता, राइट? सो अब आप खुद देख लो, मिना तो स्टार्ट कर नहीं पा रहा. बेन डेविस भगवान जाने साइन करा भी है कि नहीं, मेरे को तो रूमर लगता है वो अभी भी. और उसके बाद अगर आप तीसरी बात पे आ जाओ, आप तीसरा ये देखो कि यार शकीरी और इग्गी जैसे बंदे तो बेंच पे बैठे हुए थे. तो Mm-hmm. जब क्लॉप भी खुद बोलता है कि यार मेरे सिस्टम में ना ये चलता है, ये नहीं चलता, तो अब आप खुद ही डाउटफुल हो एज अ मैनेजर कि भाई ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. नैट फिलिप्स को हम बेचने वाले थे, उस बंदे को हमने फर्स्ट टीम में खिला लिया. तो सारा कंफ्यूजन ही हुआ पड़ा था यार, कौन क्या ही करता. और जो भी हम हारे या ड्रॉ करे ना हमने वो चुन्नू मुन्नू टीम से, वट एवर इट इज, बट वो हमने अपनी वजह से करा, क्योंकि हमने चांसेस फिनिश नहीं करे.
और हर एक टीम को पता है, प्रीमियर लीग में हर एक टीम को पता है, अगर लिवरपूल आपसे 1-0 से जीत रही है ना, तो आप एक गोल मार सकते हो। जब तक लिवरपूल 2-0 नहीं करती तब तक आपके पास चांस है। तो हमारे लिए आई मेन वो है कि भाई जो चांस मिल रहे हैं वो कन्वर्ट करो। आई थिंक अनदर रीजन हम लोग वो गेम्स क्यों हार रहे थे छोटी टीम से, थोड़ा साइकोलॉजिकली है, बिकॉज देर इज नो वैन डाइक, देर वॉज नो हेंडरसन। तो एक मेंटली यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। सेकेंड, जब आप पिच पे हो एंड वो इंस्ट्रक्शंस जो जिसके लिए आप मतलब आपको पता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर माने बॉल ले जा रहा है, रॉबर्टसन ओवरलैप कर रहा है और बॉल इंटरसेप्ट हो गई, देन आपको पता है पीछे हेंडरसन है जो इंस्ट्रक्शंस बोल के सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है, एटलीस्ट ही गेट अ क्या कहते हैं, ही गेट दैट ऑर्गेनाइजेशन गोइंग बाय लाइक शाउटिंग इंस्ट्रक्शंस। बट नाउ देयर इज नो हेंडरसन, देयर इज नो वैन डाइक, and for some time we didn't even have Allison in the start of the season as well. ना ना वो तो तो आप ये देखो, लाइक सारे लीडर्स हट गए पिच से, एंड मिलनर डज नॉट स्टार्ट एवरी गेम, इवन ही वाज एग्जैक्टली। इंजर्ड फॉर सम टाइम। तो सारे लीडर्स हमने एक एक करके हटा दिए पिच से, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज नो वॉइस। लाइक अगर आप इवन मैचेस देख रहे हो, आई मीन आई सॉ अ लॉट ऑफ मैचेस ऑनलाइन एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वॉच देम विदाउट द कमेंट्री। तो ऐसा लग रहा था कि लाइक हम हमारे प्लेयर्स कुछ बोल ही नहीं रहे, लाइक बहुत ही शांत गेम चल रहा था। यू कुड जस्ट हियर क्लॉप एंड एग्जैक्टली। पेप लिंडर्स शाउटिंग फ्रॉम द साइडलाइंस। तो जब वो डिफेंसिवली इश्यूज होने लगे, वो क्या हो गया ना, वो दैट क्रिएटेड मोर प्रेशर ऑन द अटैकर्स कि भैया अगर हमने गोल एग्जैक्टली। नहीं मारा तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो वो प्रेशर के अंडर हमने देखा कितनी सिंपल सिंपल चांसेस हम लोग मिस करने लग गए। और फिर वो बिल्कुल। एकदम घटिया सा मैच यार, वो देखो लेस्टर वाला, वो जीत तो कैसे हारे, वो तो मेरे को मतलब इतना गंदा लग रहा था वो मैच के बाद तो। यार, वो तो मतलब आप मान लो कि लेस्टर में हुआ ये था कि हाफ टाइम के पहले वार्डी लिटरली फाड़ रहा था, बस उसने गोल नहीं मारा हमारे अगेंस्ट। तो हाँ। वहां पे साइंस आ रहे थे। और वो इसलिए है कि भाई, अब जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये करा कि भाई बॉल दे दो आप सलाह माने को, वो आगे लेके जाएंगे, वो देख लेंगे अपना, हमने बस बॉल पास करनी है। हाँ। यार अब आप एक बात बताओ, थियागो जैसा बंदा तो पीछे डिफेंस में पास कर रहा है, या नीचे विंगर्स को, लेफ्ट बैक्स को दे रहा है, फुल बैक्स को दे रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? थियागो का काम आगे जाना है, उसको मिडफील्ड, अटैकिंग मिडफील्डर, इज नॉट इवन अ डिफेंसिव मिडफील्डर। बट आई थिंक ये बात मैंने सीजन के पहले भी कही दी थी कि भाई क्लॉप थियागो को वैन डाइक और फेबिनो की पोजीशन में खिलाएगा। और मेरे को पता था क्यों खिलाएगा, क्योंकि भाई हमने साइन ही नहीं करा बैकअप कोई ढंग का। जनवरी में भी हमने लास्ट वीक साइन करा, तो अब ये बात तो चलो अब कह ही सकते हैं, लास्ट सीजन छोड़ ही दो, देर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इट। सो वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन, रॉन्ग डिसीजन टू सेल की जाना हुएवर टू वुल्फहैम्पटन, व्हाट डू यू थिंक? I was gutted to see him go, to be really, really honest. I think his overall ceiling is way higher than Nico Williams. ओके। Sorry for लाइट सेशन that. होता है। So yeah, his ceiling is way higher than Nico Williams in my opinion. यस। Also, another factor with Hoover was that he is क्या कहते हैं, he can play center back as well. He can play right back as well, which really helps the team, and which is something which Klopp really likes, that he has versatile players on the bench. या So I think it was overall a wrong decision, but if you see like Wolves wanted Kijana Hoover, and we needed Jota. I mean, the Jota signing was great. Like it was immaculate in my opinion. एग्जैक्ट। So इट वाज, so इट वाज। so I think it was something like I think Edwards would have thought कि यार चलो ठीक है दे दो. We need Jota more than we need Hoover right now. अगर जरूरत पड़ी तो probably we'll play Milner over there. I mean that's the only way out I can think of. So it's आई like थिंक दैट्स बैंग ऑन। I think एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक छोटा सैक्रिफाइस कर दिया. We can look at it like that. डेफिनेटली आई थिंक यू आर बैंग ऑन देयर। अगर आपको ऑप्शन मिले कि यार हुएवर रखोगे या योटा रखोगे, तो ऑब्वियसली बंदा योटा के पास ही जाएगा, एस्टैब्लिश बंदा है और उसने करा है काम, ऐसा नहीं है कि ही Yeah, जस्ट
been absolutely. there like Minamino who hasn't been given the opportunity, या बंदे ने गोल ज्यादा नहीं मारे, बंदा आया, बंदा हैट्रिक मार के चला गया, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो अनफॉर्चुनेटली वो एक शिटी गेम था चैंपियंस लीग का जिसमें क्लॉप ने उसको खिला Yeah. दिया, जबरदस्ती खिला दिया। एंड आई थिंक वो एक फेज था, वो नवंबर दिसंबर का वाला एक फेज था जहां क्लॉप ने काफी सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए थे। So Hmm. I think this whole pressure of losing Van Dijk and other players, we could also see in Klopp जो substitutions वो कर रहा था, काफी आपको दिख रहा है कि पिच में काफी कुछ गलत चल रहा है टीम में, and that was a very negative influence, you know, in the team. Thankfully, by the end of the season, it was not there anymore, and Van Dijk is also coming back soon. So hopefully that works out. बाकी यार Yeah. जाना हुएवर, आई थिंक आई रेट हिम वेरी वेरी हाईली। मैं तो ये कहता हूँ कि यार गोमेज और हुएवर तो लिवरपूल के फ्यूचर से मेरे लिए, राइट। बट द प्रॉब्लम बेसिकली वाज कि एक बंदा देना है, अब उन्होंने देना था तो वुल्फ को चाहिए था, हमें I योटा think चाहिए था, I हमने ले I लिया। I I think एक और चीज ये थी, like looking at it from Wolves perspective, कि Wolves sold Doherty to Tottenham, हाँ, and they wanted somebody to be like a backup for Semedo, यस, because they didn't know whether Semedo will be able to adjust to Premier League or not or whatever. So I think Wolves की side से it was a very 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 good deal, like at that money, and also because यार हम लोगों ने installments मांगे यार, मतलब हम लोग बोल रहे कि हाँ तुम लोग 4.5 ले लो पहले और फिर कर लो, तो them asking for Hoover is हम fair तो enough, ईएमआई I क्लब है भैया, हम तो ईएमआई क्लब है भैया। और ईएमआई क्लब से याद आया भाई साहब, आप लोगों के लिए एक बढ़िया वीडियो आ रहा है इस वीकेंड से पहले, मैं रिलीज करूंगा फॉर श्योर। ईशान याद है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के आपके, मेरे को थोड़े से आपको मैंने भेजे थे पेज। हाँ वो नहीं आ रहा अभी, वो नहीं आ रहा। पहले भैया लिवरपूल फैन है, थोड़ा लिवरपूल की बेइज्जती कर दें, उसके बाद बाकियों की बेइज्जती करेंगे, वरना लोग बोलेंगे बायस्ड है। तो तो आवर फर्स्ट रोस्ट इज कमिंग अप ऑफ लिवरपूल एफसी। very nice, And very nice. it's gonna be coming this week. So I certainly hope that anyone who's watching, please do watch it and rate it as much as you can. Feedback जरूर दीजिएगा, right? Okay, sorry for the uh, untimely promotion. Let's go back to the question again. So, do you think that Nico might go out on loan to Saints? uh I don't think he will, to be really really honest, because that would essentially mean that we'll have to get somebody as a backup for Trent, and also that I don't think we'll go for anybody this summer as a right back backup, because if you go, then you'll have to go again for a younger player, and if you have to go for a younger player, then might as well keep Nico and give him the minutes. Yeah, fair enough. And 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 you have Milner also playing left back and right back for you. he'll play anywhere you tell him to. Milner is like that, and I don't think we are in the situation right now that we can like play Gomez also as a right back, because I mean we have seen Klopp do that a lot, like till I think the 18-19 season. After his injury, I don't think he'll be played there, because of, I I mean I'm hoping that he does not have a massive pace loss after that patella injury. But usually after injuries like that, player loses a lot of pace. So let's see what happens. Yeah, yeah, makes sense. Yeah, I mean, we've had someone like Sturridge who literally lost so much of pace because of his injuries. I mean, the talent was still Yeah, there. yeah, Unfortunately, we lost a world class player, and like England's absolutely, number one, by the way. He would have, absolutely, he's the one absolutely. who could challenge Harry Kane any day in day out, and we just Yeah. lost that guy through injuries. Anyway, so let's move on to the next one. There's a lot of questions. Thank you guys so much. Really appreciate this. So, do you think we should keep Keita and or sell? Oh God. Oh, this is a very touchy question for Liverpool fans. So, I mean, I'm a huge Keita fan. I'm a huge Keita fan, and I absolutely think he deserves at least 6 months. Like these 6 months till like the January transfer window comes, it's going to be pivotal for Keita. And not only like with respect to Liverpool, but with respect to his own career as well, because once you are labeled as a big club flop, you know, then to get your career back again, it gets kind of tricky, because that mental pressure on you is a lot. So I just hope he clicks this season.
Like he stays injury free. Like staying injury free is the biggest thing. And like I think the last season was really unlucky for him. He was not just getting a break from the injury. That was really, really bad for him. I just hope he stays How? injury free. And I'd What? see again, even with him, the talent is there to see for everybody. Like especially if there are a lot of Liverpool fans, especially Ritwik, who's a stats nerd. Like I'm not like I wouldn't call myself a stats nerd, but I'm like into it, but not like that deeply into it as he is. So if you Understood. see the stats like from the perspective of how Liverpool play, then you'll see how important Keita is, and then you'll see that why he was brought. But him being unavailable is like the worst case situation because he's a player who can do everything. Like he can keep the ball neatly, he can progress the ball with dribbles, and he can give that incisive pass as well. So yeah, again the same thing with even Chamberlain. Like the injuries have screwed him over, and I don't know. I have a Yeah. feeling that he might be sold this season, like Chamberlain, not Keita. Yeah, before the Roma game, Ox was on fire, literally on Yeah, fire, and Arsenal fans were cursing themselves to not yeah, support him and letting him go and all that. So that's really unfortunate. Now coming to Keita, I really think this is the last season for him. If yeah, he is injured, he's off because yeah. I just checked. He has till 2023 with us. His contract lasts. So you would want to cash in on that 48, 49 million which we had spent on Correct, him, plus correct. add-ons if there were any. So Yeah, we would definitely would want to either cash in or get some kind of good results out of him, because when he came in I was super so excited because for me Naby Keita is like N'Golo Kante but with more attacking versatility. And when I yeah, compare him to N'Golo Kante, that guy is like class. That guy has a yeah, different level altogether. Right yeah, now, the only person who's literally keeping this particular Chelsea team aloof in top four and as champions is N'Golo Kante. Otherwise, they will be just बिखर जाएंगे वो लोग अभी चेल्सी वाले, अगर कांते हट जाता है वहां से तो उनका yeah. कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. So that's that's what kind of energy and communication that Kante brings in, the kind of efforts he puts in. The same goes for Naby Keita at Liverpool, but his injuries and his problems have been so pathetic for us कि भाई अब लगता है कि यार या तो पैसे कमा लो इससे या भाई तू एफर्ट डाल ले, उसके बाद दो ही Correct. रास्ते हैं. क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि 2023 तक बैठे रहेगा, बिकॉज वी डोंट वांट अनदर मार्कोविच. Yeah, yeah, of course. And I think with respect to Keita, there are a lot of people who keep on saying that how he has still not learned English and how he's not settling in, etc., etc. I don't think there are a lot of players who don't learn the local language yet play really good in their respective leagues. But with Keita, I think he just needs to remain fit. I mean, that's the only thing with him. Once he is fit, after that, there is no looking back for him because the talent is there. I think he is motivated enough, to play. But again, if he doesn't remain fit, then it's no point in that. I just hope, like I think I heard that we are parting ways with our like a lot of player people in our medical team as well. I think Chris Morgan is on his way out, so Okay. I hope if that happens, that can be like a fresh start for him. And I think we got somebody from Leverkusen. I think like a doctor or somebody from Leverkusen, which we just took like in the last couple of months. I think of the last season. Um, So I hope really that should have changes things for us with respect to our injury crisis which happened last season. I really should have signed Alicia Smith from Germany, Bundesliga, Dortmund. Yeah. Yeah. Anyways. Extra motivation for everybody. Extra motivation, yes. Oh my god. Okay, so Vishal again has one more question for you. माना कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव क्लब हैं ईपीएल में, बट हम हमारी एकेडमी के प्लेयर्स पर उतना ट्रस्ट क्यों नहीं करते. बाद में डिफेंडिंग जरूरत पड़ती है, नैट और राइस को खिलाना ही पड़ा.
देखो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक किसने प्रेडिक्ट करा था यार कि वैन डाइक गोमेज माटिप तीनों साल एक ही सीजन में इंजर्ड हो जाएंगे और इतने लंबे टाइम के लिए इंजर्ड होंगे यार। और द वर्स्ट पार्ट इज दैट देयर इंजरीज वेंट अनपनिश्ड। तो क्या ही बोले Yeah. बंदा तो भाई वो सीजन ही ऐसा था, उसमें आप क्या ही बोलो। अब अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरे सीजन भी ये होता है तो फिर तो यार देखो यार साफ सीधी बात है। देखो लपोर्ट इंजर हुआ था तो वो 19 पॉइंट से हारे थे हमसे, ठीक है, उनका एक बंदा इंजर्ड हुआ था। हमने हम्म, फिर भी भाई कुछ ना कुछ करके, जब चेल्सी ने 200 मिलियन खर्च करे हैं, इन्होंने एक और डिफेंडर ले लिया 60 मिलियन का डियाज, और ये लोग कर ही जा रहे हैं खर्चा, फिर भी हम जाके थर्ड प्लेस पे आ चुके हैं। तो यार वो एक अचीवमेंट है ही। अगर हम फोर्थ भी आ जाए तब भी अचीवमेंट ही होती बॉस, क्योंकि absolutely, दिसंबर में absolutely. हम टॉप पे थे। ये बस वही मैं बता रहा हूँ, एक जो जनवरी और फेब हमेशा रहा है हमारा, खराब ही रहा है कुछ भी कहो। यही जनवरी में पहले साइनिंग कर ली होती डिफेंडर्स की, या इन्होंने पहले समर में सोच लिया होता, तो बात अलग ही होती डेफिनेटली फॉर श्योर। तो यार देखो ये तो कोई प्रोडिक्ट कर नहीं सकता, क्या बोलते हो? नहीं, आई टोटली अग्री भाई। मतलब ये तो कोई, मतलब कोई अगर बोलेगा कि हमें एक फोर्थ चॉइस सेंटर बैक खरीद लेना चाहिए था स्टार्ट ऑफ द सीजन में, तो यार ये चीज अगर आप देखो, वैन डाइक की आप इंजरी हिस्ट्री देख लो, तो कोई इंजरी नहीं थी उसको, खास इंजरी। लोग ये भी कहते हैं कि गोमेज की काफी गंदी इंजरी हिस्ट्री। एक्चुअल में गोमेज की उतनी गंदी इंजरी हिस्ट्री नहीं है। एक जो उसका बर्नली के अगेंस्ट आई थिंक बेन मी के टैकल से इंजरी हुई थी, वो कॉन्टैक्ट इंजरी थी। उससे पहले हाँ जो उसका एसीएल इंजरी थी, वो मतलब किसी को भी कभी भी कैसे भी हो सकती है। मतलब दैट इज नॉट अ साइन दैट you're an injury prone player. तो he didn't have any history that he'll get injured again. एंड उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप फिर से इतनी बड़े टाइम के लिए सिमिलर टाइप ऑफ इंजरी होगी। हाँ, मटीप का मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उसको मसल इंजरीज एवरी नाउ एंड देन होती है। तो एंड वी न्यू कि हाँ, फेबिनियो है हमारे लिए खेलने के लिए, एंड वी हैड नैट फिलिप्स एज वेल एज अ फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक। तो आई डोंट थिंक एनीबडी वुड हैव थॉट कि ऐसा कुछ होगा। बट अगेन लाइक जैसे आई थिंक विशाल भाई ने लिखा था क्वेश्चन में कि हम अपने एकेडमी प्लेयर्स पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते। यार एकेडमी प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना इज वेरी वेरी टफ, बिकॉज when you're playing for a big club like Liverpool, the biggest thing is that you want results. And yeah. it's very similar to like the situation last season when like Reece Williams or Nat Phillips were not performing. There was a lot of pressure on them. And Hmm. we and I think Nat Phillips is what, 23 or 24 already. So he's not young per se, but still like relative to the amount of top flight games he has played, he's young. So if you see that like उनके ऊपर इतना अगर प्रेशर आ सकता है, आप ये देखो, रीस विलियम्स was playing the sixth division of English football last to last season, and last season he was playing top level Premier League football, that too for the best club in the country. That's not an easy feat mentally actually. Hmm. So for any player from the academy to step up, वो भी इतना ड्रास्टिक लेवल का, वो भी लिवरपूल के लिए, वो भी क्लॉप के लिए, is extremely tough. Like we have seen so many players who have come and taken like a month to get used to Klopp's intensity, his tactics, everything. तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। And just due to this mental thing which I spoke, I really liked Hoover because I remember जब वो FA Cup game में उसको substitute in किया था, I think it was within, he was playing centre back that game, and within 5 minutes, I think he dribbled हमारे बॉक्स से बॉल लेके टुवर्ड्स द अदर हाफ, उससे दो तीन I बंदों think so. को, हाँ, दो तीन बॉल बंदों को कटा के आ गया। Whoever कर सकता। So that just shows the confidence that that reliance on his ability which he had. So that is something which you look for in a young player always. तो Yeah. आई थिंक वो थोड़ा बहुत, अब क्या, जैसे एज ए डिस्कस लाइक हूवर को जाना पड़ा, दैट ओके, वी कांट डू एनीथिंग। नहीं वो तो है ही। देखो यार वो तो अब जिसको क्या बोलूं, जिसको जाना हो तो जाएगा ही, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते। इतने प्लेयर्स की सैलरी जब उनको पता है कि जैसे अब डंकन का हुआ था, बॉबी डंकन का सीन हुआ था, तो दैट वाज आल्सो इंसल्टिंग फॉर द क्लब, दैट वाज इंसल्टिंग फॉर द प्लेयर। उसका ना अपने एजेंट को फायर कर दिया, ये हुआ वो, ही इज नॉट हैप्पी। सो समटाइम्स प्लेयर्स का भी इशू होता है। सो ट्रांसफर इज नॉट लाइक कि हमें फर्स्ट टीम ही दो। there are a lot of demands that come in. I think the Athletic ने इस पे काफी अच्छा ब्लॉग भी लिखा था, how the transfers actually work.
तो आई Yeah. डेफिनेटली रिकमेंड यू गो थ्रू दैट ब्लॉग एंड यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी टेक्निकल एंड पर्सनल चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि वो आप हर चीज को अग्री नहीं कर सकते हो. That's why the negotiations are not just about the salary or the first team, the time you spend on the pitch and everything. There's lot of things that go on. सो विशाल भाई देखो, आपने ये बताया कि रैशफोर्ड ग्रीनवुड तो यूनाइटेड के हैं. देखो यूनाइटेड का कल्चर रह चुका है कि उन्होंने हमेशा अपने यंगस्टर्स को मौका दिया है. उनके हर सीजन में एक नया यंगस्टर्स आता ही है, वो खेलता है उनके लिए. सो डेफिनेटली दे हैव दिस हिस्ट्री दैट एवरी youngster is there in every single game of them, in at least in the bench. बट यार आप अभी ये देखो कि पिछले 8-10 सालों में रैशफोर्ड ही निकला है उनके वहां से, और कोई भी नहीं है. जबकि हमने ट्रेंड भी दे दिया है, कर्टिस भी आया है. अनफॉर्चुनेटली बॉबी डंकन वाज नॉट. हुएवर भी वो प्रॉमिसिंग है. निको विलियम्स का भी अच्छा फ्यूचर है. तो मैं 4-5 तो मैंने आपको अभी गिना दिए. ये भी पिछले 2-3 साल की बात है बस, राइट. और सिटी का फोर्डन, तो यार फोर्डन के अलावा कौन निकला सिटी के, उससे तो आप लाइक आप मेरे को बताओ. सो And इट्स ओके, and and इट्स to अ be वन टाइम and to थिंग. be एंड टू बी ऑनेस्ट, फोर्डन को गॉर्डियोला ने कुछ नर्चर वर्चर नहीं करा है. तुक्का लग गया है, उसके पास बंदा आ गया है. वरना आप गॉर्डियोला की साइनिंग देख लो, और जब उसको सिटी मिली थी उसने जब प्लेयर्स थे वो देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे का साइनिंग लेवल क्या है. और उसके पास जो पहले प्लेयर्स थे वही उसको जिता रहे हैं, राइट. सो ऐसा कुछ so भी नहीं होता कि आप साइनिंग में कभी गलत कर सकते हो. I सॉरी. feel इसमें इसमें थोड़ी सी चीज ये भी है कि अगर आप देखोगे फोर्डन, everybody knew was a generational talent. I mean, सबको पता था that he's gonna shine whenever he starts, getting game. Same was with या Sancho. Sancho को या time नहीं मिल रहा था because उसकी position पे already इतने बड़े players थे. And as I said कि मतलब when you're a younger player to play for a top level club, it's really tough. And like Klopp, Guardiola is also very tactically demanding. तो सैंचो को टाइम नहीं मिल रहा था. सैंचो वेंट टू डॉर्टमंड. फोर्डन ने भी थोड़ा सा रोना किया कि भाई नहीं, मुझे खेलना है. एंड देन गार्डियोला काइंड ऑफ गेव इन कि हाँ चलो ठीक है. देन ही स्टार्टेड प्लेइंग हिम मोर हाँ एंड नाउ एग्जैक्टली. he's replaced सिल्वा. एग्जैक्टली मतलब ठीक है. लाइक एंड एज यू सेड, भाई. लाइक we have seen so many players over the last so much time. Of course, you know a hit and a miss again would be Brewster. If you see, you can say Brewster was a hit and a miss. But then if you look at it, like यार हमने ब्रूस्टर से अच्छा पैसा ले लिया. इट वाज नॉट अ बैड. और अभी भी वापस ले सकते हैं उसको. अगर आप फाइनेंशियली देखो, इट वाज नॉट अ बैड डील. ठीक है. सेम फॉर किहाना हुवर. आई थिंक उसकी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, हुवर की वुड हैव गॉन समवेयर अराउंड अबाउट 10 million. अदरवाइज Jota's valuation for that transfer would have been 50-55 million. So in a way that was also fair enough for us, I think, in that way. But I think जब से क्लॉप आया है, लाइक, और पेप लिंडर्स आया है और वीटो मैटोस आया है, मतलब जब से तो काफी कल्चर हमारा चेंज हुआ है. जो बीच में काफी स्टैग्नेंट हो गया था अंडर हॉडसन एंड आपका या रॉजर्स. उस टाइम पे काफी स्टैग्नेंट हो गया था एकेडमी कल्चर हमारा. वो काफी रिवाइव किया है एलेक्स सिंगलथॉर्प, माइकल बील, पेप लिंडर्स, वीटो मैटोस, इन सब कोचेस ने. तो आई थिंक एकेडमी का जो रिजल्ट होता है ना, वो आप 5 साल के बाद ही देख सकते हो. तो it's great that we had Trent and Curtis coming up from the academy as local players. So that is like another advantage altogether, because they're local players, they're extra motivated. वो तो मतलब it's like having Gerrard and Carragher again in the team in a way. So I think we'll start seeing a lot more players. And I mean, I won't say that I follow the academy like very closely, but I do thoda bahut. And keeping that in mind, I feel that there are a lot of good players who are coming, and I think within the next 2 years or so, we'll see really, really good players coming up from the academy. श्योर. नहीं तो साउथहैम्पटन तो है ही हमारे पास. अब तो रेडबुल क्लब्स हो गया भाई. अब तो रेडबुल क्लब्स लिवरपूल हमारे पास लिवरपूल आ बी अकेडमी. लिवरपूल बी अकेडमी. गए. I think, but I think we are still on the positive note, because the number of people that who are there in academy now versus which were there like 5-7 years back, the change has been very drastic. So positive है यार. देखो अब पता है क्या है, अब चेल्सी, सिटी, पीएसजी, बारसा, मैड्रिड, चलो मैड्रिड बारसा अब तो नहीं, बट इन लोगों ने पैसा इतना खर्च कर दिया ना पिछले 4-5 सालों में कि
लगता है कि यार हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे, तो हम थोड़ा सा एक एक उस बबल में हैं इस वक्त कि भाई हमें भी खर्चा करना चाहिए कि प्लेयर आ जाए। लेकिन उन्होंने भी वर्नर लिया, वर्नर ने एक कंट्रीब्यूशन करा हो किसी भी मेन गेम या सॉफ्ट गेम में भी, तो मेरे को बता दो भाई कमेंट में, क्योंकि मेरे को लगता नहीं उस बंदे ने कुछ करा है। सो दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज, यू नीड, सो विद लिवरपूल वी नीड द राइट गाय फॉर अ पोजिशन विच इज इधर वेकेंट और वी नीड बैकअप फॉर। उनका ये है कि हाँ भाई चलो 10 बंदे ले लो, चलो हम पोजीशन फिगर आउट कर लेंगे बाद में क्या होता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। और एंड अभी सबसे सही बड़ी बात कही कि सॉरी। सॉरी टू कट इन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आई थिंक विद चेल्सी सिटी एंड ऑल दीज टीम्स इज दैट मैड्रिड एंड बार्सा आल्सो प्लेयर्स आल्सो डोंट कंप्लेन दैट मच बिकॉज उनकी वेजेस बहुत हाई है सो उनके लिए चलता है सब मतलब दे लाइक चलो गैरथ ठीक है गैरथ बेल को ले लो भैया, वहां पे हाँ फ्रीलांसिंग गोल्फ कर रहा है वो वहां पे सैलरी वहां से ले रहा है। तो वही वही घूम फिर के बात वही आती है ना, बंदा लिटरली चिल मार के स्टैंड में बैठा होता है, सैलरी बढ़िया ले रहा है और वहां पे बस गोल्फ खेल रहा है, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो जाना नहीं चाहता। मतलब अलग ही केस है भाई साहब, अलग ही केस है लिटरली। और सो ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, माय गॉड भाई मेरे को फिक्चर्स भी डिस्कस करने हैं। सो वुड यू टेक, ये आपके लिए ही है, आप ही आंसर करिए। uh, हाउस नाउ वेट नो आई मीन सी अगर आपको जिनी को रिप्लेस करना है तो नॉय हाउस विल बी अ बेटर ऑप्शन और बेलिंगम नहीं आता भैया, तुम हालैंड एम्बापे वाले लाइन में मत जाओ। ये इसका जवाब बेलिंगम अगले वीडियो में मिलेगा तुम्हें मेरे। बेलिंगम बहुत महंगा जाना है लाइक बेलिंगम नहीं आता भाई। आई थिंक for his age, the kind of talent he has is insane, insane. Like another generational talent from England, I think. And I feel that I don't know why nobody like gave like 16 million जितना भी था उसके लिए which Dortmund paid last season. I mean, they could have just paid that. I mean, it was evident. It was like you are gonna. It was like the gamble which Chelsea took in what 2002 when they bought Lampard. टर्न 2 टर्न 3 जब हाँ भी उन्होंने लैम्पार्ड खरीदा था तो वो हाँ वाला हाँ गैम्बल था इट्स अ वेरी सिमिलर गैम्बल मतलब you see a world class talent he is a kid I agree but at the same point of time you know if you give him the right environment he'll grow so I mean but again Bellingham has the best environment to grow right now he's playing really good football and he is at one of the best places to grow right now for any youngster एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली एग्री। एंड आई थिंक देखो, अगर हम साइन कर रहे हैं, इफ यू आर साइनिंग एनी न्यू यंगस्टर, इट्स ऑलवेज गुड फॉर द क्लब। आई मीन एटलीस्ट हम फाल्काओ को साइन करके अंडर 23 में नहीं खिला रहे, कम से कम आप ये शुक्र करो कि हम एटलीस्ट वी आर इन द राइट डायरेक्शन, राइट? सो it's perfectly fine to have ups and downs, it's perfectly fine to have some misses, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चलते रहेंगी। अगर किसी को ये पता होता कि भाई ये प्लेयर खरीदो इतने में, खरीदो ये प्लेयर इतने गोल देगा, ये टाइटल जिताएगा, तो भाई वो प्लेयर अलग लेवल पे होता और हर बंदा उसके पीछे भाग रहा होता। अनफॉर्चुनेट दैट डजंट वर्क। yeah लेस्टर सिटी भी प्रीमियर लीग जीती थी, और यू नो तो वो एक टीम कॉम्बिनेशन अलग लेवल पे होता है उनका। अगर आप कोऑर्डिनेशन देखो उनका, लेस्टर सिटी का आज भी है। लाइक सो लेस्टर सिटी फॉर मी इज लाइक द न्यू टॉटनम, टॉटनम जहाँ पे होना चाहिए था। नाउ बिकॉज दे डिड नॉट मेक दो साइनिंग, दे नेवर वर एबल टू रिप्लेस हैरी केन। सोल्डार्डो ले लिया, लोरेंटे ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन हैरी केन को कभी रिप्लेस ही नहीं कर पाए, उसको प्रेशर ऑफ ही नहीं कर पाए। आज टॉटनम वहीं पर ही है जहां पे वो 5 साल पहले थे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए सिवाय चैंपियंस लीग फाइनल के, राइट? लेकिन लेस्टर सिटी को आप देख लो तो अब भाई ट्रॉफी जीतना शुरू कर दिया उन्होंने फिर से। 5 साल लगे उनको, 5-6 साल लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रॉफी जीती है। सो आप एक इंक्रीमेंट में अगर आप ग्रो करोगे तो आप ग्रो करोगे, बाकी यार देखो पैसे उड़ाने वाले बथेरे पड़े हुए हैं, अब उसमें जितनी बात करी जाए कम है। I think I agree मतलब वो जो लेस्टर एंड टॉटनहम वाला पॉइंट है totally agree and that is also because Daniel Levy और जो उसकी वेज बिल है how he maintains that so I think उस वजह से भी he has not like added depth और जो this top and change of managers which he's already started off doing now is not going to help him at all. True. Yeah, that's how, yeah, I guess that's how it is because I mean यहाँ पे किसी ने लिखा था कि ट्रेचल अभी भी अपने हनीमून पीरियड में है जैसे ओले था, तो आई थिंक सॉर्ट ऑफ आई एग्री। आई मीन लेट्स फेस इट,
देखो सच बताऊं, चेल्सी का ना मेरे को समझ नहीं आता बॉस। आई मीन रॉबर्टो डी मटोयो इंटरिम मैनेजर आया, बंदा चैंपियंस लीग जीत गया। ये बंदा आया रैंडमली, एक एक इनकेपेबल कह सकते हो या मिस लाइक मिस एवरेज फायरिंग स्क्वाड ही था। मिस फायरिंग, यस एग्जैक्टली, मिस फायरिंग स्क्वाड ले लिया और सीएल जीत गया। तो यार सच बताऊं तो मतलब मेरे को ना इनकी ना कुछ, ये तो डॉक्यूमेंट्री चाहिए या इनकी कोई, मेरे को इनका इन डेप्थ ब्लूप्रिंट कुछ चाहिए इन लोगों का कि भाई ये जीत कैसे जाते हैं। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट कोचेस अपनी स्क्वाड पे लगाते हैं ना, कि हम लोग स्क्वाड डेप्थ बनाएंगे, और हाँ स्क्वाड डेप्थ बनाने से क्या होगा कि प्लेयर्स के अंदर आपस में काफी कंपटीशन होएगा, तो दे विल गिव देयर बेस्ट। ये उन्होंने बोर्ड रूम पे ले बोर्ड रूम इन द सेंस अपने कोचिंग स्टाफ पे ले गए। मैनेजर के ऐसे लगा के रखी हुई होती है कि भाई अगर तूने नहीं जीता कुछ तो तू जाएगा, ठीक है, तू हिस्ट्री देख ले हाँ हमारी, हम भेज एग्जैक्टली। हमें फर्क नहीं पड़ता, तुझे 10 मिलियन चाहिए ना कॉम्पेंसेशन में, रख भाई, तू रख, कोई दिक्कत नहीं है, बट तेरे को जीतना है। तो जब आपको पता है कि मतलब एज अ मैनेजर कि आपको जीतना ही है, तो देन योर मेंटालिटी चेंजेस कंप्लीटली। सो दैट्स व्हाई आप देखोगे जो भी चेल्सी मैनेजर्स है, दे आर वेरी वेरी, मतलब जो उनके लिए एक बार ही चल गया वो वही चलाते आते हैं, वो उसको हाँ टिंकर नहीं करेंगे। जैसे आप कॉन्टे देखो, कॉन्टे ने अपना वही 3-5-2 वाला ब्लूप्रिंट लिया, वही चलाते गया। मोरिनियो ने फर्स्ट टाइम में अपना 4-2-3-1 वाला ब्लूप्रिंट लिया, वही चलाते गया, फिर उसने वापस आके भी ट्राई किया, वो नहीं चल पाया, बिकॉज थोड़ा टैक्टिक्स इवॉल्व हो गए थे, एंड उस टाइम पे उसकी स्क्वाड भी उतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम। तो हाँ, डिमेटेओ ने भी वही किया, उसको पता था कि भाई मैं लो ब्लॉक में ही जीत सकता हूँ, मेरे पास टोरेज वो पुराना वाला टोरेज नहीं है, तो वैसे ही खेलो, और उसने जीत जीत लिया। हाँ डीमोट में तो पता नहीं कैसे जीता भैया, वो तो मेरे को भी समझ नहीं आया था उस टाइम पे। मैं शॉक में था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं 2012, मेरे को पता है, मैं टीवी देख के सोफे पे लेटा हुआ था, मैंने लिटरली आंख बंद कर दी थी अपनी, और पूरे पूरी पूरी गेम में चेल्सी ने कुछ नहीं करा था लिटरली। अगर आप देखो कि हाफ लाइक फुल टाइम के बाद भी बस लेटे पड़े थे वहां पे बंदे। बायर्न म्यूनिख के लेटे पड़े स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, चेल्सी वाले खड़े हुए चौड़ में, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं था, भागे ना कुछ करा, बट डिफेंस लाइन भी खड़े हुए थे वहां पे वो लोग। बस बायर्न म्यूनिख की वेट करी थकने की, उन्होंने गोल मार दिया, बस यही है। तो क्या ही बोले यार। तो लक होता है भाई, किस्मत होती है। अब अल्लाह पहलवान तो गधा पहलवान, यही बोलेंगे। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। और ये बात भी सही है कि यार चेल्सी ओनर्स आर ऑब्सेस्ड विद विनिंग। आई थिंक निशान ने भी वही बात कही कि एब्सोल्युटली। दैट इज अ थिंग यार। अब अनलाइक एफएसजी, ओके फाइन, ये भी पॉइंट डाल दिया उन्होंने। तो आई डेफिनेटली यार थिंक है। आई थिंक यार, इसमें पता है क्या यार, एक पॉइंट इसमें जो मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि इट्स नॉट दैट एफएसजी डजंट वांट टू विन, ठीक है, इट्स मोर ऑफ लाइक कि एफएसजी को एक फाइनेंशियल जो मतलब गाइडलाइंस बताई गई थी व्हेन दे वर बाइंग, एंड हाउ यूएफए इज गोना एक्ट ऑन द एफएफपी एंड एवरीथिंग, सो इट फिट इन देयर मॉडल एग्जैक्टली। तो दे वर लाइक कि हाँ चलो ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वेज बिल हम लोग मेंटेन करेंगे, हमारे खर्चे इतने नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, तो वो एक काफी अच्छी चीज थी एफएसजी के लिए। बट इफ यू लुक एट चेल्सी, चेल्सी ने जैसे अभी 200 मिलियन खर्च किया, जितना भी खर्च किया लास्ट समर, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। एफएसजी वोंट डू दैट बिकॉज एफएसजी हैव अ स्ट्रक्चर कि भैया हमें ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, हम लोग इस फाइनेंशियली इससे हिलेंगे नहीं। चेल्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेल्सी इज लाइक कि अच्छा, हमें एक 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 सीजन के लिए आप बैन लगा दोगे ट्रांसफर की, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो, जब तक बैन की इफेक्टिव डेट आएगी हम लोग 2 प्लेयर साइन कर लेंगे। ये उन्होंने सो दे करा, आर बैन के पहले उन्होंने साइन कर लिया था। आई लाइक, थिंक दे साइन पुलिसिच, राइट? Pulisic, yes, and they were very lucky that their deal of Kovacic had an option to buy. So it was हाँ not like a buy which you do in that summer, but you were just triggering a clause in the previous contract only. तो हम्म दे वर प्रीटी, वो उन्होंने सोच के किया था कि अगर आगे चल के उनको बैन होगा, बिकॉज द टॉक्स वर ऑलरेडी स्टार्टेड कि ऐसा हो सकता है, सो दे पुट अ कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो yeah, and since this Marina Granowski has come, they have started, you know, they've become a more efficiently run club, I'll say.
So yeah, but at the same time यार देखो यार जो भी ये है क्या कहते हैं इसे जो फाइन लगा है सुपर लीग के लिए. I think FSG is the only owner who's not paying it out of the club's money. I mean, it might be a small fine. I think 3 or 3.5 million ka fine, I think. But Yeah, they're the 3.5. only, so they're the only owners who are not paying it via the club's treasury, and they're paying it via their own pocket. So दंगे हो जाएंगे again, that करेंगे तो, दंगे हाँ हो जाएंगे वही करेंगे तो. वो And one तो of the होना ही था. reasons they are like now in the market, I don't think FSG would have been in the market, but one of the reasons is because of this screw up in the Super League. उनको Yeah, फैंस के अंदर बहुत प्रेशर है. So that's, you absolutely. know, that's one of the reasons. So अगर आपको लग रहा है कि FSG भाई थोड़ा बहुत वो एकदम से भक्त बन गया है लिवरपूल का और वो चाहता है लिवरपूल को इतना एकदम से ग्रो करना, तो ऐसा नहीं है. वो अंडर प्रेशर है. Yeah. So, or And and it's very important. The owners should be under pressure because they should know that the fans and the players and the coaching staff are paramount of the club. उनसे important और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है. So it true. is very very important that they are under pressure. Like for that matter, for any other club as well. Exactly, exactly. Now, finally, we are done with those questions. I mean, we did like around, I think, half an hour plus for the questions to be answered. We'll just, slide back to the fixtures. I need your Ishan. I need your inputs on the fixtures. Yeah, I think we have spoken about December. अभी तक दिसंबर पे ही Yeah, थे, इससे पहले हमने questions लिए थे. I think the 15 मिनट ही हुए थे. So, correct. अब एक बात मैं कहूंगा, और जो मैं हर वीडियो में कहना चाहता हूँ, जो मैं हर बार कहना चाहता हूँ, पता नहीं इस पे एक और वीडियो निकालनी पड़ेगी मेरे को कि नहीं, कि यार ये हमें जनवरी से मार्च में हो क्या जाता है. What the hell happens when we are not signing enough players or enough backups in January transfer window and it's literally wasted. Like, I mean, Arsene Wenger की फील आती है कि Arsene Wenger जनवरी विंडो में कुछ भाव नहीं देता. उसने बस आई थिंक एक ही साइन करा होगा, ऑजिल को साइन करा था, दैट्स अबाउट इट. और ओबामा यंग लेकर आ गया था वो, राइट. ऑजिल और ओबामा यंग लेकर आया था, नॉट ऑजिल, सॉरी. ओबामा यंग लेकर आया था जनवरी विंडो में, राइट. और हम वैन डाइक लेकर आए हैं रिसेंटली, नॉट एनी अदर बिगर साइनिंग इन जनवरी विंडो इन द पास्ट ईयर्स. सो जनवरी मार्च 2017 18 18 19 19 20 and this current season, Yeah, we have always lost points, we have drawn some games, fatigue होता है प्लेयर्स को, कैराबाओ से हम लोग बाहर हो जाते हैं because we play a under 23 team or whatever the reason is. हाउ डू वी टैकल दिस? इसका इसका सोल्यूशन क्या है अब? क्योंकि हम बार बार तो एक्सक्यूज नहीं कर सकते ना कि भाई हम थक गए. अब सिटी तो हर बार काराबाव में तो रोड, मतलब भैया वो तो पूरा रोलर कोस्टर राइड होती है हमारे लिए, लेकिन वो तो बुलडोज कर रहे होते हैं. सो I व्हाट इज I व्हाट इज द आंसर टू दिस? I think there are, in my opinion, two answers. One is again, which we spoke about, एक break रख लो या तो आप that New Year and Christmas period में, like a 10-day or a 2-week break or something like that, like a winter break which is there in Germany. या तो आप वैसा रख लो, या तो अगर वैसा नहीं रखा जा सकता, so then you buy more depth. And again, the problem with buying more quality depth is, one, you have to spend more. Two, you have to give them more salary. अगर quality रखनी है, so that means bigger salaries. And the third thing in this aspect is that, with respect to current Liverpool team, is that Klopp likes small squad. उसको 25 प्लेयर 27 प्लेयर वाली स्क्वाड नहीं चाहिए. He wants a small 21 to 23 player squad. उसको ज्यादा प्लेयर्स नहीं पसंद. तो ये सब चीजें सोचते हुए, I mean, of course, we have to upgrade on the backups which we have. I have a feeling that Minamino will be sold for sure for that. And शायद से even Timberlake will be sold. But, I mean, depends upon who is ready to give anything about 25 for him, I think. Because with the homegrown quota of his, I think 25 is a bare minimum which Liverpool is going to ask for him. Okay. Yeah, we do have a lot of players outgoing. अभी मतलब Yeah. चल ही रहा है ऊपर नीचे. आई थिंक नाबी कीता का चल रहा है, ऑक्स का चल रहा है, मिलनर का चल रहा है, मातीब का भी चलने लग गया अब तो आफ्टर हिज इंजरी. आई मीन अगर मातीब खेल लिया होता पिछले सीजन तो शायद इतना बातें नहीं हो रही होती. हाँ, अगर Matip होता तो I think it would have been way better. Like, till the time Matip was there, I think we were still top of the table. And as soon as he went out, and everything just started falling.
And even like I think even Nat Phillips will be sold from just my gut feeling, because he's not that great a ball player as a defender. Like how Klopp views you know any situation is कि आप source पे cut कर दो. अगर आप source पे चीज को cut कर दोगे, then you won't have to like say probably do a last ditch tackle. अगर आप मान के चलो एक काउंटर है, अगर काउंटर को जो जो प्लेयर स्कोर करने वाला है गोल वो ही पास काट दोगे तो इंटरसेप्ट कर इट्स दोगे अगर आप उसको बेसिकली, या नो, आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट। तो इट्स लेकिन आई लाइक थिंक दैट। यही यही प्रॉब्लम है, ये जो आपने पॉइंट बताया, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, यही जो करेक्ट। पॉइंट है, यही हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि वेन एवर द प्लेयर्स कम नियर टू आवर बॉक्स, दे मैनेज टू स्कोर, इज बिकॉज कि हम लोग प्रेशर ही पहले ही उतना लगा देते हैं कि लास्ट में हमारा एक आध दो प्लेयर बचता है और उसको ड्रिबल पास करके बंदे गोल मार देते हैं। और and those goals are not very, like, a world class goals, they're pretty average goals, it's just that we let it down. इट्स लाइक वो जो लास्ट टू लास्ट सीजन सार ने गोल मारा था काउंटर पे, तो इट्स सिमिलर टू दैट, लाइक वी डिफेंड विद बिग स्पेसेस, and when you're defending big spaces, it's the probability of conceding a goal is high, but Yeah, it gives you again the offset is that आप आगे इतना attack कर रहे हो on the in your attacking third and in your midfield third, that you are like okay चलो ठीक है, अगर आया you have players like Van Dijk and Gomez who have electric pace and good decision making and great tackling who can handle it. So most of the times वो हो जाता है handle, but sometimes when it doesn't get handled, then you have like those Watford matches which happened last season. okay, yeah, I think I completely agree there. So that's the thing. Now, let's just wrap it up. I guess it's been an hour. I'm pretty sure people are getting bored now. But and also I also I'm really appreciate that you have been asking so many good questions to us, Yeah. and it's been really a pleasure to answer each one of them, and हमें भी थोड़ा ज्ञान मिल ही रहा है यार एक दूसरे से अभी, to be very honest, कोई अपन परफेक्ट तो है नहीं, तो बट स्टिल। सो ओके, अभी हमने बात कर ली नैट फिलिप्स की भी। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि यार अगर हो सके क्लॉप भाई नैट फिलिप्स को रख लो, क्योंकि वो और रीस विलियम्स की जोड़ी अच्छी लगी रही है। काराबाओ एफए में काम आ जाएगी आपके, एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेजेस में काम आ जाएगी। एड्रियन को आपने खिलाना ही है वहां पे, तो एटलीस्ट आपके दो सेंटर बैक बच जाएंगे। हालांकि ट्रेंड की जगह कौन आएगा ये मेरे को नहीं पता, बट मिडफील्ड में हमारे पास डेप्थ है। फ्रंट थ्री के लिए मैं हमेशा से कह ही रहा हूँ कि यार कम से कम दो बंदे और साइन करने ही हमें पड़ेंगे अगर हम शकीर या ओरिगी में से किसी को भी बेच रहे हैं या दोनों को बेच रहे हैं तो। सो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। सो नाउ कमिंग बैक टू द फिक्चर्स अगेन, सो अब हमारे पास है मार्च अप्रैल थोड़ा सा, like it's that point of time when you are in the further stages in the UCL. आप you're talking about round of 16, you're talking about the semi-finals as well. तो how do we, how do we go about it? आपको क्या लगता है कि do we like focus on UCL this season, do we focus on the Premier League, or do we focus on either one of them and maybe some random like FA Cup या Carabao? यार see, I'll be honest, like FA Cup, Carabao Cup तो भूल जाओ. Like Klopp doesn't rate it at all because he As knows usual. because like even like if you see last to last season when we went into the final of the FA Cup when we lost to Arsenal, even at that point of time it was kind of like testament of our young players who played so well to like help us reach there. And also उस टाइम पे अगर आप देखोगे इतना फिक्सचर कंजेशन था, लाइक हम लोग क्लब वर्ल्ड कप भी जा रहे हैं, उसका ट्रैवल है, उसके मैच हैं, फिर वापस आना है, और मतलब इट वाज वेरी बैक एंड फोर्थ. तो आई डोंट थिंक जितना पैसा मिलता है एफए कप कैराबाओ कप से, इंक्लूडिंग द प्राइज मनी एंड द टीवी मनी, इट्स that huge for Klopp to actually gamble. For Klopp, it's just something like a open audition for the young players. It's like an open audition कि मतलब आप एक अच्छे higher level पे from the academy level खेल सकते हो कि नहीं.
If you have it, you show it. And if you see, uh, Curtis played really well in the FA Cup, Carabao Cup since the past 2 seasons, because उसको थोड़ा अपना स्टाइल में खेल सकता है वो, उतना प्रेशर नहीं है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट चैंपियनशिप टीम और लीग वन टीम, तो आपका लेवल अच्छे से और दिखता है, सो दैट जस्ट गिव्स अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर प्लेइंग, कर्टिस एंड्स अप प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग गेम बिकॉज ही इज लाइक अच्छा मैंने गोल मारा है, like how he scored against Everton, and then all of a sudden that confidence is there, and he'll be like like I can play whatever way I want to, if I feel like. So I think we won't see much, but again we'll be all in for Champions League and Premier League both. Okay, understood. ठीक है, तो अगर आई थिंक अगर हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले ही है. Now, I'll not go for like predictions and all that stuff. I mean, we are like right at the end of it, our discussion right now. So, any final thoughts, any final opinions or comments? I think this season, I mean, I hope I'm wrong, but I feel the title race will be between Liverpool, City, and Chelsea. I Yeah. think Chelsea will be really strong this season because I'm sure they'll strengthen their squad even further in the summer for sure. And the thing is that Tuchel as a manager is really good. I mean, if he has a squad which buys into his ethos, and which I think he has already, and he has shown that he can trust his players if they show that they can play well, Yeah. and I think Chelsea will be like one of those dark horses for the title race, along Yeah. with of course Liverpool and City. Yeah, definitely. I think that is the way because क्योंकि आर्सेनल और टॉटनम का तो कुछ लग नहीं रहा और मेरे को लगता भी नहीं कि ये चैलेंज कर भी सकते हैं. Mm-hmm. So I really think that these are the teams, City और Chelsea है हमारे अगेंस्ट फॉर द टाइटल रेस. अगेन हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई बात नहीं करी क्योंकि देखो तुक्का एक बार लगता है, तुक्का बार बार नहीं लगता, सीधी सी बात है. इस पे ना हम बात करना चाहते हैं इस वक्त. ठीक है. So Again, yeah, I even guess with United, I'll say this thing: if United buy a really good defensive midfielder, like somebody like a Fabinho who can defend and progress the ball both, then it'll be very very interesting. But I then they'll don't. finally unlock Pogba. After years and years and years. I thought they bought Matic for that. Yeah, but if you look at Matic, he does not have the legs anymore, and secondly, he was never like a very good passer. Like if you हाँ, compare yeah, him, ये जरा भी. even Matic in his uh, prime, you can't say Yeah. that he's even one half as good as Fabinho in passing, or like for that matter of fact, as good as Rodri in his passing. So I think that is one area which either they develop Fred and McTominay further, but in their current system which they are playing, they don't want to. But again, it's like they are thinking that जैसे रॉजर्स का था ना लिवरपूल के, बस अटैक करते रहो, गोल पड़ गए, एक पड़ गया कोई नहीं, हम दो मार देंगे, बस हाँ वही. अटैकर्स ले लो, सैंचो भी ले आओ, हालैंड भी ले आओ, सब ले आओ, कवानी सेंस का नहीं है कुछ एक्सटेंशन भी कर दो. भैया. हमने टी शर्टें बेचनी है, हमें तो भैया मार्केटिंग, हम मार्केटिंग कंपनी है, हमने तो भैया पैसा कमाना है. हमारा स्टॉक लिस्ट में भी इनका मैंने देखा, इनका स्टॉक में भी आ रखा मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो लोग इनके स्टॉक भी खरीदते हैं बेचते हैं. तो भैया धंधा है, धंधा ही हाँ, रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं है. कुछ तो नहीं है. सॉरी दोस्तों, लेकिन आप अब हमारे कॉम्पिटिटर शायद नहीं रहे, तो इतना हम सीरियसली आपको लेते नहीं अब. चलो एनीवेज, I think this whole session was really great. We started off with the fixtures. We had some really good questions from our friends. Thank you so much guys for being here. It really means a lot. तो छोटा सा चैनल है हमारा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी लाइव गलती से आ जाते हैं. आई सिंसियरली होप कि यार ये सीजन अच्छा रहे, फाइन फाइन ट्यून्ड रहे और इंजरी फ्री रहे और ज़्यादा फालतू हरकतें ना हो, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था लास्ट सीजन. पोस्ट जनवरी इट वाज ब्लडी फ्रस्ट्रेटिंग. yeah. और टाइटल रेस है, लाइक 3 हॉर्स रेस है, फॉर श्योर 3 हॉर्स रेस है. लेस्टर शायद इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दे तो कर दे, बाकी लीड्स यूनाइटेड भी काफ़ी एक्साइटिंग टीम है, तो किसी को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते. जैसे प्रीमियर लीग में हमने नहीं करा, पिछले साल एस्ट्रेलिया ने भी
तोड़ ही दिया था हम लोगों को almost. So you know, let's see how it works out. Baki, all the best to everyone, all the best Liverpool fans especially. And Ishan, thank you so much for coming. Yeah, thank you so much for giving us your Thank you time. so much for calling me, bro. Thank you. Yeah. Okay. So we'll take